Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that I have given you complete introduction of unit number 14, food, and today I will deliver its first lecture. So my dear students, this lecture will be about plants and foods. So my dear students, let's quickly move forward towards an ice-breaking activity. So why do we need to eat food? Do plants need food? So quickly have a look at these pictures. क्या आपको लगता है हम ये सब कुछ खाते हैं and we grow and we get energy, लेकिन plants also grow. So how do they get energy? क्या ये भी खाना खाते हैं? No, they do not eat food. So इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? क्योंकि हम तो खाना एनर्जी खाने के लिए एनर्जी के लिए खाते हैं ना, सो दैट वी गेट एनर्जी. सो प्लांट्स अगर ग्रो करते हैं तो इनको भी एनर्जी की जरूरत है क्योंकि ये लिविंग थिंग्स हैं. सो वेयर डू दे गेट एनर्जी? आपको नहीं पता. लेट्स सी, आगे हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम दैट बाय द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर ऑल द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकग्नाइज दैट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सो यहीं से आपको पता चल गया कि प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट की मौजूदगी में. कैसे बनाते हैं, क्या होता है, लेट्स सी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर इज द इस्लामिक पर्सपेक्टिव. लेट्स हैव अ लुक. हैव यू कंसिडर्ड व्हाट यू सो? इज इट यू हु कॉज इट टू ग्रो और इज इट वी हु डू सो? सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम कह रहे हैं कि पौधे जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं. बेसिकली कोई भी जो शय है वो कुदरत नहीं रखती कि वो कोई काम कर सके. हर शय जो है इस दुनिया में वो अल्लाह ताला के हुक्म से जो है वो काम करती है, बढ़ती है, फलती फूलती है. सो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से ही जितने भी बीज हैं, जितने भी पौधे हैं वो ग्रो करते हैं और उनके ऊपर फल लगते हैं और फूल लगते हैं. So my dear students, let's quickly move forward towards the pre-reading question. Listen to the question very carefully and then answer them. What is the food of plants? Plants का क्या खाना होता है? प्लांट्स का खाना नहीं होता. सो वेयर डू दे गेट एनर्जी? कहां से लेते हैं वो अपना खाना? सो लेट्स स्टडी अबाउट दैट. हम आज इसी के बारे में रीडिंग करेंगे. अगर आपको नहीं पता कि प्लांट्स अपना खाना या अपनी एनर्जी कहां से लेते हैं. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज ओपन पेज नंबर 130 इन योर साइंस in your GK3 books. I hope everybody has opened the page. So let's start reading. Put your fingers where I will read. Plants and foods. We need food to get energy. Plants also need food, but they do not go anywhere to have food. They prepare their own food. They need water, air, sunlight to make their food. Green leaves absorb sunlight. The role of sun in this process is similar to that of heat source while cooking meals. Without sunlight, plants are unable to make their food. The food making process in plants is called photosynthesis. What is the process? Photosynthesis. So my dear students, let's quickly make it very easy for you. आप इसको इस तरीके से देखें कि प्लांट्स जो हैं अपना खाना लेने के लिए या एनर्जी लेने के लिए कहीं दूसरी जगह नहीं जाते. दे आर स्टिल एक जगह पे रहते हैं. सो हाउ डू दे गेट एनर्जी? They make their food inside their leaves in the presence of sunlight, air, water. इस तरीके से ये जो है ये अपना खाना अपने ही अंदर खुद बना लेते हैं. सनलाइट के बगैर पौधे जो हैं वो अपना खाना नहीं बना सकते या एनर्जी नहीं ले सकते. तो सनलाइट की हीट जो है, सन की जो हीट और लाइट है वो बिल्कुल इसी तरीके से काम करती है जैसे कि आपके किचन में खाना बनाने के लिए आपको आग की ज़रूरत होती है या हीट की ज़रूरत होती है. सो जस्ट लाइक दैट सूरज की रोशनी और गर्मी जो है वो पौधों के लिए कुकिंग का जो है वो काम करती है और उनको एनर्जी देती है. सो पौधे अपना खाना बना लेते हैं अपने लीव्स में और इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस. यानी कि फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स मेकिंग. सो लाइट की मौजूदगी में जो वो खाना बनाते हैं दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ प्लांट्स मेक देयर फूड विदाउट ईटिंग एनीथिंग. ओके. So my dear students, plants, how do they make their food? They need sunlight, water and air to make their food. Inside their leaves,
the sunlight is absorbed and then they need water from the soil and there is air all around them. So this is how they can make their food. So my dear students, here you can see with the help of sunlight, air and water, the plants are making their food and they are growing. जब इनको खाना बन जाता है, इनको energy मिल जाती है, so plants grow, they function properly. So my dear students, now let's move forward towards the evaluation. Quickly listen to the questions very carefully and then answer them. These are the listening and speaking questions on page number 137 of your GK3 box. So my dear students, how do plants prepare or make their food? In the presence of sunlight, air and water, plants make their food. So describe the role of sunlight in food making process of plants. So just like heat is required for cooking food in the kitchen, similarly sunlight is required by the plant to make their food inside their leaves. So which part of the plant absorbs sunlight? It is the leaves of the plant that absorbs the sunlight and there the food is made. So मैं आपको एक बड़ी interesting बात बताती हूँ कि जो leaves of a plant होते हैं, they are also called the kitchen of a plant. जैसे आपके किचन में सारा खाना बनता है, इसी तरह लीव्स में क्योंकि सनलाइट एब्जॉर्ब होती है, पानी जो है वो रूट्स से ऊपर जाता है और हवा से वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. सो द लीव्स आर कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट. So my dear students, now let's quickly move forward towards the practice. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video or you can get it in print from by your teacher. Write down your name and your roll number and complete the picture by filling the given boxes. So my dear students, how this plant will make its food? Soil से ये क्या चीज लेगा? Water. Very good. Write down water here. Then what will it get from sun? Sunlight, heat. And what will it get from air? It will get air, or you can also write carbon dioxide. Both are right. So air is also fine. So this is how you will complete this part and then you will move forward towards the fill in the blanks. So these are also very easy. Plants make their food by process of photosynthesis. Very good. Plants need sunlight, air and water to prepare their food. Plants absorb sunlight in their leaves. Very good. So complete this worksheet and we will move forward. I hope you have finished it. Now we will move forward towards the homework. So for homework, what you will do is you will do question number 1 on page number 139. How do plants prepare their food? So this is very easy. We have also done it in the worksheet. मैंने आपसे भी orally भी questions पूछे हैं. So just do it. Write it down in your notebooks for homework. So it's the time for wrap up. So what have we learned today? Today we have learned that plants also need food like us for energy. So how do they get their food? They prepare their food by photosynthesis. Plants need water, air and sunlight to make their food. And green leaves absorb sunlight. So my dear students, now I hope you all know that how plants make their food and how they get energy. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.